Good morning. Welcome to my class again. So, coordinate geometry, first part, that is distance formula, we have finished out. Second is the section formula. Section formula. So, section comes from the word sect, S-E-C-T, sect. So, section means to cut. Section means to cut, to slice. Cutting down any straight object, that is section, that is cutting, that is slice. So, section formula means the cutting formula of a line segment. So, there are two types of section formula. One is internal section formula and there is external section formula. So, that two formula I will explain you, but in class 10, we have to deal with only internal section formula. But what is external formula? Just a little bit introduction I will give you. And what is the internal section formula? The introduction I am giving you. Then we will start on. See. So, section formula means the cutting formula. Cutting down a line segment. So, see. This is internal section formula. This is external section. First, I will show you what is external, what is internal section and what is external section. Then, in details, we will study this one, internal section. Because we don't know this in class 10. External section, we don't need. Internal section is also known as internal division. External section is also known as external division. So, this is internal division of a straight line segment. This is external division of a straight line segment. So, see. So, suppose this is a line segment AB. And this is the same line segment AB. Got it? If a point divides, if a point intersects, if a point divides this line segment internally, in the ratio m is to n. Suppose this is the point. P point is dividing the line segment AB in the ratio m is to n. In the ratio m is to n. So this much is m, this much is n. Then this is internal division or internal section. मतलब अगर एक line segment को एक point internally divide करेगा m ratio n पे, तो उसको इंटरनल डिवीजन कहेंगे या इंटरनल सेक्शन कहेंगे. और एक्सटर्नल सेक्शन में क्या है कि इफ अ पॉइंट P, हियर द पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. हियर आल्सो इफ अ पॉइंट P divides the line segment AB, here it was internally, here it will divide the point P will divide the line segment externally. That means if you extend this, AB, that means the P is dividing AB externally, means the point P is dividing extended AB. Extended AB in the ratio m ratio n. In the ratio m ratio n. Then that is external division. See, यहाँ पे point P ने AB को भाग किया था, तो AP m भाग था, PB n भाग था. यहाँ पे भी P point ने AB extended AB को भाग किया. That means the point P is dividing the line segment AB externally. That means extended AB in the ratio m ratio n. That means AP will be m. यहाँ पे P point ने AB को भाग किया था m ratio n में, तो this much was m, AP was m, PB was n भाग. Good. तो यहाँ पे AB को P point ने भाग किया, तो this भाग will be AP will be m, this भाग will be m. Just the introduction I am giving you, what is external division. This you will get in plus 1. It is none of your business right now in class 10. This we have to deal with right now. This is internal division. This is external division. In plus 1 we will get. Got it? So, right now we have to study that a point, if a point divides a line segment internally in the ratio m ratio n. M is to n. This is read as m is to n. This is the ratio. So, this is the internal section. To see the formula I am writing.
if a point P, suppose this is the point P, this is the line segment AB. If a point P divides the line segment AB in the ratio m/n, that means this VAG is m, this VAG is n, then coordinates of P equal to, suppose A point is x1 y1, B point is x2 y2, and P point is xy. That means we need to find by internal section formula you can find the position of the point of division. What is the point of division here? P is the point of division, AB is the line segment. So you can find the coordinates of the point P. That means you can find the position of the point P. That means you can find the position of the point of division, coordinates of the point of division. Actually इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला हम स्टडी क्यों कर रहे हैं मैं बता देता हूँ. उसका दो कंडीशन है. एक तो कंडीशन है कि सर अगर एक लाइन दिया रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2 y2. कोऑर्डिनेट मींस पोजीशन. तो इसका x1 y1 दिया रहेगा, इसका x2 y2 दिया रहेगा. तो इस P पॉइंट ने ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन को काट दिया और P पॉइंट का हमारे को कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो xy मान लिया हमने. तो इसका x भाग कितना बराबर होगा? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. तो दिस इज द फॉर्मूला. दैट मीन्स ये जो x पार्ट होगा ये है, ये जो y पार्ट होगा ये है. दैट मीन्स अगर आपको एक लाइन सेगमेंट दिया रहेगा और पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है, यू नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, देन दिस इज द फॉर्मूला. गॉट इट. एंड अगर आपको उल्टा दे दिया रहेगा कि इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यू नीड टू फाइंड द रेशियो. दैट मीन्स टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू विल गेट इन इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला. वन, यू नीड टू फाइंड द पोजीशन, अनदर यू नीड टू फाइंड द रेशियो. दैट मीन्स व्हेन द रेशियो विल बी गिवन, you need to find the position, you need to find the coordinate, and if the coordinate will be given in the next question, आपको दो तरीके का दिया रहेगा. एक बार आपको रेशियो दिया रहेगा, आप पोजीशन या कोऑर्डिनेट निकाल लोगे बाय दिस फॉर्मूला. और अगर एक बार आपको क्या देगा कि पॉइंट दिया रहेगा, पोजीशन दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो इन दैट केस यू नीड टू फाइंड द रेशियो. दोनों तरीका का प्रॉब्लम कर दूंगा. तो ये हमारा प्रॉब्लम फॉर्मूला है. ये स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो. अब इसका एप्लीकेशन एक कर देता हूं आपको, फिर आपको कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा इसका. अच्छा, थोड़ा सा और पॉइंट रह गया इसका, कोरोलरी वगैरह कल कर देंगे, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल कर देता हूं. तो दिस इज द फॉर्मूला अप्लाई करने का. सी एग्जांपल, कि ये लाइन सेगमेंट इज गिवन, फर्स्ट पॉइंट इज गिवन एज 4, second point is given as 8, 5, and ratio is given, internal ratio is given 3:1. 3:1. That means this is the 2 points, these are the 2 points, n points of a line segment, and point P is cutting this in the ratio 3:1. That means this भाग is 3, this भाग is 1. तो हमारे को निकालना क्या है? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आपको बताया था. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का फॉर्मूला क्या है जी? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. गुड. सी, व्हाट इज m प्लस n? 3 + 1. गुड. दिस इज m रेशियो n ना. फर्स्ट इज m, 3 + 1. Good. What is m? 3. What is x2? This is x1. That is x2. Good. 3 × 8 plus n. What is n? 1 into what is x1? 4. Good.
नेक्स्ट अगेन m प्लस एन, y पार्ट, ये x पार्ट निकाल लिया. एक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वी नीड x पार्ट ऑल्सो, y पार्ट ऑल्सो, एब्सिस ऑल्सो, ऑर्डिनेट ऑल्सो. व्हाट इज m प्लस 1? 3 प्लस 1. सी व्हाट इज m हियर? 3 into what is y2? 5. Good. What is n? 1. What is y1? Minus 3. So this is how coordinates can be determined. This is the formula. So just solve this. 3 plus 1 is 4. 3 into 8 is 24. 24 plus 4 into 1 is 4. 24 plus 4 is 28. Good. Separated by comma 4. 3 5s are 15. 15 and it would be 3 into 1 is minus 3. The minus 3, 15 minus 3 will be plus 11. Plus 11. So like this you can find the coordinate of the point. You try this using this formula. From tomorrow we will do again. Okay, thank you.